Assalamu alaikum students. Today we are going to read about the conditional sentences. There are four types of conditional sentence: zero conditional sentence, first conditional, second conditional, and third conditional sentence. Let me explain what is conditional sentences. Conditional sentences are those sentences in which you have one condition और वन रीज़न. कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जिनमें शर्तिया जुमले होते हैं, और शर्तिया जुमले ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप कहते हैं अगर मैंने ये काम किया होता तो ऐसा हो जाता. इट मीन्स दैट यू हैव द वर्ड अगर इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और इफ़ इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. Then these type of sentences will be called conditional sentences. Conditional sentences will be consisted of two clauses. First clause will be of if clause and second clause will be of main clause. It means that आपका sentence दो clauses में होगा. पहला clause if clause कहलाएगा और second clause main clause कहलाएगा. Zero conditional sentence, here is the formula that you use for the zero conditional sentence. If plus present simple or present simple. It means कि in your if clause you are going to use the present indefinite tense, and in your main clause you are going to use present indefinite tense. There is no change in both of the clauses tenses. So refers to the situation that are always true or पॉसिबल. इट मीन्स कि ऐसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हमेशा सच होती है. यू कैन से दिस फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ. एग्जाम्पल इज़ इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. इट मीन्स कि अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो ये पिघलती है. दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ. देयर इज़ नो चेंज. आप ऐसा नहीं कह सकते इफ़ यू हीट आइस इट विल नॉट मेल्ट. सो इट मेल्ट्स. दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ. दैट्स वाई दिस इज़ ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस. एंड फार्मूला ऑफ दिस सेंटेंस विल बी first form of the verb in first clause and first form of the verb in second clause. First conditional sentence formula is here if plus in the first clause. In if clause you are going to use this present indefinite tense, and in main clause you will use future indefinite tense. So this is a formula and this is a sentence refers to a situation that is possible or realistic. ये ऐसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि मुमकिन भी हो और हकीकी भी हो. फॉर एग्जाम्पल आई से टू यू अगर आप मेहनत करोगे आप पास हो जाओगे. दिस इज़ द कंडीशन दैट इज़ पॉसिबल and this is coming ahead, and this will be possible or realistic. So example are here. If I go to the shop I will buy something. अगर मैं शॉप पर जाऊँगा तो मैं कुछ ख़रीदूँगा. Next is if I study hard. अगर मैं पढ़ूँगा I will pass my exam. So both our condition are possible or realistic. You are using the first form of the verb in the first clause and will, and first form in second clause, and first form in first clause and future indefinite in second clause. Second conditional sentence is here is the formula if plus past simple plus would plus verb first form of the verb. It means that in the first clause you are going to use the past indefinite, and in the second form or second clause you will use would plus first form of the verb. This refers to a situation that is impossible or unlikely to happen. ये एक ऐसी कंडीशन के बारे में ऐसी सेंटेंस लिखा जाता है जो कि नामुमकिन हो या उसके होने के इम्कानात कम हो. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई वॉन द लॉटरी. अगर मैं लॉटरी जीत जाऊँ आई वुड बाई अ मैंशन. तो मैं एक महल ख़रीदूँगा. हियर इज़ I won the lottery. One is second form of the verb and would and first form of the verb. So this is the formula of second conditional sentence. इस तरह के तमाम sentences जिसमें आप कहें कि अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा. These type of sentences you can use second conditional sentences formula. Third conditional sentence. Here is a formula. If plus past perfect. This is main if clause and this is main clause. Would have plus third form of the verb. Refers to situation that is reality. ये एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बोला गया सेंटेंस होगा जो कि रियलिटी होगा, सच्चाई होगा, दैट कैन बी चेंज नाउ.
फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, अगर आपने मेहनत की होती तो आप पास हो जाते. इट मीन्स दैट दिस कंडीशन इज टोटली इम्पॉसिबल. नाउ देयर विल बी नो चेंज इन दिस कंडीशन. सो इस कंडीशन को अब चेंज नहीं किया जा सकता. अगर आपने मेहनत की होती तो आप पास हो जाते. दिस इज ऑफ द पास्ट एंड दिस इज रियलिटी. दिस इज एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट. सो दिस इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस. Now here is the extract point of the whole of the video. In first conditional sentence, your formula will be if plus first form of the verb with s or es. If you have singular pronoun, then s or es with first form of the verb. And in main clause you have will plus first form of the verb. In second conditional sentence, your formula is if plus second form of the verb, and in second clause you have would plus first form of the verb. In third conditional sentence you have if plus had plus third form of the verb, and in second clause you have would have plus third form of the verb. If you will cram these rules or this one, if you will cram the whole first conditional, second conditional and third conditional formula, then this will be very easy for you to solve the MCQs of first conditional, second conditional and third conditional type of sentences. I hope so this is very clear. If there is any question you can ask.